ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 9. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் third skanda chapter 9. Shloka number 1 to 25 is called Brahma Stuti. பிரம்மதேவர் பகவானை துதித்தல். பிரம்மோவாச்ச ஞாதோசி மேத்ய சுச்சிரான்னனு தேஹபாஜாம் न ज्ञायते भगवतो गदिरित्यवध्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराध्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतद् अवबोधरसोधयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि धत्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं यो नाधृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्कैः एतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैषि नाथ हृदयां पुरुहास्व पुंसां तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुकलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् शुद्धृद्रिदादुभिरिमा मुहुरर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराश्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमितमात्मन इन्द्रियार्थम् आयाभलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अहन्यापृतार्थकरणा निशिनिशयानां नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आसे श्रुतेक्षितपतो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति ततोपचितोपचारैः आराधितसुरगणैः हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैक्यो
नानाजनेष्वहित सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराद्यैः दानेन शोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितकर्हि चिद्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीथभेद मोहाय बोधदिशनाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलाः आसायते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्ववृद एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरत कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिन्नत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्थदिष्ण्यम् अध्यासित सकललोक नमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यं दिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेश्च यात्मकृतसेतुपरिसयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जडरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेग आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशधात्यताहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलं च यथा विजह्यां नाभिह्रदादिह सधोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्दशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावद प्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्
उत्ताय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्यागिरापनयनात् पुरुषः पुराणः। मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विरराम स किन्नवत्। अत्ताभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषन्नचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्बसा। लोकः संस्थानविज्ञान आत्मनः परिकिद्यतः तमाह घातया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां तथं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। यथा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतीचक्षीत मां लोको जह्यातर्ह्येव कश्मलं। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीसि सृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः। ऋषिमाध्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजो गुणः। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां। यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः। नाळेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्चकर्थाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाप्युदयाङ्कितं। यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगः समाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि अथो मयि रतिं कुर्यात् देहाधिर्यत्कृते प्रियः। सर्ववेदमयेनेधम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृजयथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते। मैत्रेय उवाच तस्माएवं जगत्स्रष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येधं स्वेन रूपेण गञ्जनाभस्तिरोदधे. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 9வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா
नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।